Namaste. Welcome or welcome back to my channel. This is me, Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, in this video I have recreated a makeup look of a famous YouTuber, Jyoti Sethi. I love her content. She is a fabulous YouTuber. So अगर आपने उनके वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उनके वीडियोस को देखो, वो बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हैं. सो आज ही उन्होंने एक रक्षाबंधन पे मेकअप लुक क्रिएट किया था और मुझे बहुत पसंद आया था. सो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दैट लुक और मैंने उन्हीं के जैसा एक हेयर स्टाइल भी कर रखा है. बट मेरे बाल आज थोड़े से ग्रीजी हैं तो मेरे ऊपर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट्स ओके, चलता है. सो आई हैव क्रिएटेड दिस लुक और अगर आप इस लुक को देखना चाहते हो सो कीप ऑन वॉचिंग. So guys, I'll first start with moisturizing my face. So I'm using this Pond's moisturizer. For primer, I'm using this Patanjali aloe vera gel. मैं इसकी थोड़ी सी ही क्वांटिटी लूँगी और अपने टी जोन वाले एरिया पे जो ज़्यादा ऑयली हो जाता है वहाँ पे इस जेल को अप्लाई करूँगी. गाइज यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 115 आइवरी. जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में फाउंडेशन नहीं यूज़ किया है बट मैं थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे क्योंकि मुझे एक्ने के मार्क्स हो रखे हैं. सो मैं नहीं चाहती कि वो ये विजिबल हूँ. यूजिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी. Don't forget to apply it on your neck. After this, I'm using this concealer from Fit Me in the shade Light. After that, I'm using Fit Me Compact Powder in the shade 230 Natural Buff. इसे मैं जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उन जगहों पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी सो दैट जो मेरा कंसीलर है वो क्रीज ना हो. She has done a very light contour, so I'm doing the same using Contour the Force Mini Bronzer in the shade 01 Top Topper. She has applied a very light blush on her cheeks, so I'm using this Nykaa palette, this shade. This is Malibu Barbie.
I'm using Sivana eyebrow palette to define my eyebrows. I'm using this brown shade. Now we are left with the eyes and lipsticks. So as seen in her video, she has not applied any eyeshadow on her eyelids. So she has simply done eyeliner और lower lash line पे उन्होंने blue color का काजल अप्लाई किया है और उसे smudge out किया है, तो मैं भी उसे फॉलो करती हूँ. Now I'm using highlighter from Maybelline Master Chrome in the shade Molten Gold. Now my look is almost complete, so I'm using this DIY setting spray. मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर पे ले लूँगी थोड़ा सा. So for lipstick, she has used a very nude shade. So I'm using Nykaa Molten Matte lipstick in the shade Carry. मैंने ऑफ कैमरा आई लैशेस अप्लाई कर लिए थे एंड देन आई हैव अप्लाइड अ बिंदी. आप अगर ज्योति सेठी का यूट्यूब वीडियो देखोगे तो आपको उसमें बिंदी नहीं दिखाई देगी, बट मैंने उनकी एक इंस्टाग्राम पिक देखी थी जिसमें उन्होंने अपने सूट की मैचिंग बिंदी अप्लाई की थी, तो मैंने भी बिंदी अप्लाई कर लिया बिकॉज आई लव पुटिंग ऑन बिंदी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना. एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस यूट्यूबर का या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का मेकअप वीडियो चाहते हो कि मैं रिक्रिएट करूं. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. एंड yeah, I'll see you in the next video. Till then, take care. और